Asurinama paschadvas Taya yati puranjana Gramakam nama vishayam Durmadena samamvita Asuri nama paschadvas Taya yati puranjana Gramakam nama vishayam Durmadena samamvita Asuri nama paschadvas Taya yati puranjana Ramakam nama vishayam Durmadena samambita Asuri nama paschadvas Taya yati puranjana Ramakam nama vishayam Durmadena samambita Nama Mataji. The translation of the word is Asuri. Asuri. Of the name of Asuri. Nama. Called. Nama. Paschat. On the western side. Dwar. Gate. Taya. By which. Yati. Used to go. Puranjana. King Puranjana. Gramakam, of the name Gramaka, Nama, called, Vishayam, the seat of sense enjoyment, Durmadena, by Durmada, Samamvita, accompanied. Translation. On the western side was a gate named Asuri. Through that gate, King Puranjana used to go to the seat of Gramaka, accompanied by his friend Durmada.
इस श्लोक का अनुवाद है, पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। Now the purport given by His Divine Grace is Srila Prabhupada. The gate on the western side of the seat was known as Asuri because it was especially meant for the Asuras. नगरी की पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। The word Asura refers to those who are interested in sense gratification, specifically in sex life, to which they are overly attracted. असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में, विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषय जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। Thus, Puranjana, the living entity, enjoys himself to his greatest satisfaction by means of the genitals. इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है। Consequently, he used to go to the place known as Gramaka. फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। Material sense gratification is also called Gramya, and the place where sex life is indulged into a great extent is called Gramaka. भौतिक इंद्रिय तृप्ति ग्राम्य भी कहलाती है, और वह स्थान जहाँ कामेच्छा तुष्ट होती है ग्रामक कहलाता है। When going to Gramaka, Puranjana used to be accompanied by his friend Durmada. ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ दुर्मद को ले जाता था। The word Vishaya refers to the four bodily necessities of life: eating, sleeping, mating, and defending. विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा या भय, इन चार शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। The word Durmadena may be analyzed in this way. Dur means dushta or sinful, and Mada means madness. द्रुमदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है, दुर अर्थात दुष्ट या पापी, और मद अर्थात पागलपन। Every living entity who is in contact with material nature is called Mada or mad. प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, मद या पागल कहलाता है। It is said, Pishachi poile yena machi chehana haya maya ghasta jivera haya se bhava udaya in prema vivarta. प्रेम विवर्त में ऐसा कहा गया है, पिशाची पाइले ये मति क्षण है, माया व्यस्त जीवेगा कार्य से भाव उदय। When a person is haunted, he becomes practically insane. जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है। When one is in an insane condition, he speaks all kinds of nonsense. और वह अनाप शनाप बोलता है। Thus, to become engaged in sense gratification, one has to accept a friend who is durmada or badly affected by material disease. अतः इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मद जैसे मित्र को
अर्थात जो भवरोग से पूरी तरह ग्रस्त हो मित्र बनाया जाता है। The words Asuri Nama Paschad Dwa are significant in another sense. आसुरी नाम पश्चात द्वाह शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। The sunrise is first visible from the eastern side, the Bay of Bengal, and gradually it progresses toward the west. सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे यह पश्चिम को जाता है। It is practically experienced that people in the West are more addicted to sense gratification. ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। Sri Chaitanya Mahaprabhu himself has testified, Paschimera Lokasabha Bhuda Anachara. Chaitanya Charitamrita Adilila 1089. चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेर लोक सब गूढ़ अनाचार चैतन्य चैतन्य आदि लीला 10वां अध्याय। The more one goes to the western side, the more you find people disinterested in spiritual life. जितना ही पश्चिम चलते जाइए, लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना ही कम रुचि दिखाने वाले रहेंगे। He will find them behaving against the Vedic standards. वे वैदिक आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। Because of this, people living in the West are more addicted to sense gratification. इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। In this Bhagwatam it is confirmed, Asuri Nama Paschad Dva. इसी भागवत में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चात द्वा। In other words, the population of the western side is interested in an Asuric civilization, that is, a materialistic way of life. दूसरे शब्दों में पश्चिम देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में रुचि दिखाते हैं। Lord Chaitanya consequently wanted this Krishna consciousness movement to be preached on the western side of the world, so that people addicted to sense gratification might be benefited by his teachings. इसीलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। Amayanachimilandasya yanam jana salakaya sakshunumiritam jena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stattam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadachi Swapadam Tika. Vandeham Siguro Sijuta Padakamalam Sigurum Vaishnavancha Shri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Deshatarini Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I read the verse again. Asurinama Paschadvas Tvaya Atti Puranjanaha Gramakam Nama Vishayam Durmadena Samavita. On the western side was a gate named Asuri.
Through that gate, King Puranjana used to go to the seat of Gramaka, accompanied by his friend Durmada. तो ये जो आज का श्लोक है, इसका अनुवाद है, पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था. Okay. And then this chapter, the characteristic of King Puranjana, the history of King Puranjana is an allegory. It's simply one history. It's not the real fact. ये जो कथा है राजा पुरंजन की, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये कल्पना करके बनाई गई कहानी है. And then in this case, in this verse, it is said that the western side of the body, or in general, is more sinful. It was what Prabhupada said here. आज के श्लोक में बताया गया है कि जो पाश्चात्य देश में, वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पापी होते हैं. It said that King Puranjana used to go to the seat of Gramaka accompanied by his friend Durmada. यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा पुरंजन उस द्वार से, पश्चिम दिशा के द्वार से अपने मित्र दुर्मद के साथ वहाँ जाया करता था. As Srila Prabhupada says, the word Durmadena may be analyzed in this way. Dur means dushta, or simple, and mada means madness. श्री प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य बताते हैं, दुर्मदेन शब्द का अर्थ है दूर यानी दुष्ट या पापी, और मद अर्थात पागल. And Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Durena hyavaram karma bhudyogat dhananjaya buddho sharanam vicha kripana phala khetava. It says, oh Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service. And in that consciousness, surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, तुम अपने ये जितने भी घृणित कार्य हैं, घृणित कर्म हैं, इनको त्याग दो और भक्ति में स्थित होकर के भगवान को समर्पित हो. जो वास्तव में सही कर्म चाहते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, वो इस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं. As Krishna says, Buddhi Yoga, through the Buddhi Yoga, what is Buddhi Yoga? कृष्णा जो है यहाँ पर बुद्धि योग के विषय में कहते हैं, तो ये बुद्धि योग है क्या? Yoga means connection, to be connected with Krishna. योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना. Buddhi Yoga, by the consciousness. बुद्धि योग का अर्थ है चेतना के द्वारा भगवान से जुड़ना. Because that Srila Prabhupada, he created this term, Krishna consciousness. ये जो कृष्ण भावनामृत, ये जो टर्म है, ये श्री प्रभुपाद ने इसकी रचना की है. Actually, Srila Prabhupada created many different terms in the process of Krishna consciousness. कृष्ण भक्ति के इस पद्धति में श्री प्रभुपाद ने बहुत सारे जो है टर्म्स दिए. For example, devotional service. जैसा कि एक शब्द है डिवोशनल सर्विस, यानी भक्तिमय सेवा, प्रेम पूर्वक सेवा. Fruitive work. सकाम कर्म, फ्रूटिव वर्क, ये शब्द श्री प्रभुपाद ने दिया है.
Krishna consciousness. These are terms that Prabhupada create to explain to us more clearly what is the message of Krishna and Bhagavad Gita and Srimad Bhagwatam. और ये कृष्ण भावनामृत शब्द श्री प्रभुपाद ने दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये जो शब्द हैं इनके द्वारा हम भगवान को, भगवद गीता को, भागवतम को आसानी से समझ सकते हैं। Always when appears the word bhakti in Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada says the translation is devotional service. भगवद गीता या भागवतम में जहाँ भी भक्ति शब्द आया है, श्री प्रभुपाद ने इसका अनुवाद प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा करके किया है। Why Srila Prabhupada do like this? श्री प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया है? Because people can think that bhakti is something only sentimental. क्योंकि ऐसा लोगों का विचार हो सकता है कि भक्ति का अर्थ तो केवल भावुकता है, भाव से मतलब है। But bhakti means one has to have the attitude of serving. लेकिन असल में भक्ति का अर्थ होता है सेवा का भाव रखना। It's not just sentiment. न केवल खाली भाव ही रखना, बल्कि सेवा का भाव रखना। One can come to the temple and goes in front of the deities and becomes like this, crying and like having some ecstasies like that, but does not have devotional service, is useless. अगर कोई मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करके केवल भगवान के सामने आंसू बहाता है और ऐसा भाव विभोर हो जाता है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये जो व्यर्थ है। Okay, and then Srila Prabhupada said this word Durmada. Durmada is the friend of Puranjana. तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि जो दुर्मद है ये पुरंजन का मित्र है। Durmada means sinful and madness. तो ये दुर्मद शब्द का अर्थ है पापी और पागल। The word of madness in Sanskrit is mada. पागल शब्द जो है इसको संस्कृत में मद कहते हैं। Let's see one verse that we can explain about this word mada. तो शास्त्रों में श्लोक आता है जिसमें मद शब्द को इसका विश्लेषण किया गया है। It's not exactly this word, but Sri Rishabhadeva says this verse, Nunam pramata kurute vikarma jadindriya pritaya prinoti na sadhu manye jata atmanoyam asam api kleshada asadeha. Instead of mada, pramata. Pramata means craziness. ये जो मद या प्रमाद ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है पागलपन। And Rishabhadeva says Indriya Priti. Indriya Priti, which is Indriya Priti. Indriya Priti means that one who wants to enjoy through the senses. तो ऋषभदेव जी इस श्लोक में इंद्रिय प्रीति शब्द कहते हैं। इंद्रिय प्रीति का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों से भोग करना चाहता है। Or as Srila Prabhupada says, sense gratification. श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति। Yes. And then Rishabhadeva says that if one is engaged in sense gratification, he becomes mad. और ऋषभदेव इस श्लोक में कहते हैं यदि कोई इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होता है तो वो पागल हो जाता है। And then nunam pramata kurute vikarma. And then he can perform all sinful activities. और इस प्रकार से वो पागल होकर के हर प्रकार के पापों कार्यों में लिप्त होता है। And then the root cause of the sinful activities is sense gratification.
जो भी प्रकार के पाप हैं उसका मुख्य कारण है इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग करना। And then one can say, oh, I cannot have any sense gratification. But it is the point. One can question like this. I don't have. I cannot have any pleasure out of my senses. कोई कह सकता है कि मैं तो अगर इंद्रियों से कोई आनंद उठा ही नहीं सकता। Yes, this sense pleasure is given by Krishna. ये जो इंद्रियों का जो आनंद है ये दरअसल कृष्ण के द्वारा दिया गया है। Actually, Krishna created pleasure. और असल में ये जो आनंद है ये भगवान ने ही। But the person who makes sense gratification as the goal of his life, he spoiled all his life. जिस व्यक्ति ने केवल इंद्रियों को तृप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, उसने दरअसल अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। For example, yesterday we had this Gaur Purnima festival. We had a lot of sense gratification. जैसा कि कल गौर पूर्णिमा उत्सव था, तो उसमें हमने बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति किया। Just to see the deities, the altar, so beautiful, so aesthetic, so well done like this. The eyes you get some pleasures, a lot of pleasure. हमने भगवान के इतने सुंदर दर्शन किए, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर जो है डेकोरेशन, इसको देख करके हमारी आँखों को बहुत तृप्ति मिली। And then singing the holy names and dancing like this, everything is pleasure. And then after that, prasadam, everything is pleasure. तो फिर हमने जो है कीर्तन सुना, हमने नृत्य किया और उसके बाद में प्रसाद खाया, ये सब से जो है इंद्रियों को आनंद मिला। But those who makes the sense gratifications the goal of life, his life is finished. लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो अपने जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति बना लेता है, वो उसका जीवन बर्बाद है। Krishna explained this in Bhagavad Gita. भगवान कृष्ण इसको भगवद गीता में समझाते हैं। ये ही संपाशा भोग धूक योनया एवते आजंत भंत को कांतेय नाते सुरमति बुद्धा. Krishna says that the Buddha, an intelligent person, he does not take pleasure in spashara bhoga. Spashara means touch. And touch one of the senses, and also the vision, the taste, and the sound like this, included all the senses. कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस आनंद में भ्रमण नहीं करता, आनंद विचार नहीं करता, जो कि इंद्रियों के विषय वस्तुओं के इंद्रियों के संपर्क में आने से जो आनंद होता है, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति भ्रमण नहीं करता। And then Krishna said, you give it two explanations. He says, Adiyantavat. This sense gratification has the beginning and the end. आगे कृष्ण बताते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग है, इसका एक शुरुआत है और एक अंत है। For example, you take some delicious food, say delicious prasad. You take some food and put in your mouth. While this food is in contact with the tongue, oh, pleasure. But we swallow it, finish. जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखा है, प्रसाद रखा है, जब हम उसको उठा के हमारे जीभ पर रखते हैं, तो जब तक वो जीभ पर है तब तक बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे हम उसको निकल जाते हैं, पेट में चला जाता है, फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। Adyantavat. There is a beginning and end.
And then Krishna says, Dukha yonaya evati. Dukha yonaya. It means that the same place that you take pleasure, you also can have suffering. तो ये जो आगे कहते हैं कि हम जो ये आनंद उठा रहे हैं, जो आनंद भोगते हैं, वही आनंद बाद में दुख भी देता है. As one, I remember on devotees, he was taking so much pleasure taking prasada. He took so many prasada that afterwards he was suffering like indigestion. प्रभु जी बता रहे हैं कि महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने एक भक्त को जानते हैं कि उसने इतना ज़्यादा प्रसाद खा लिया कि बाद में उसके जो है पेट में और छाती में दर्द होने लग गया. The same place that we get pleasure, you can get suffering. This is a big danger in this world. भौतिक संसार का यही नियम है कि जो चीज़ हमें आनंद देती है वही हमें दुख देती है. Nowadays is like this. Many young people, especially in the West, they go to the drugs like this. At the beginning, pleasure. But then afterwards, the life is completely spoiled. तो काफ़ी सारे युवा विशेषतः पाश्चात्य देशों में वो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं. शुरू में उनको बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन बाद में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है. As Krishna says in Bhagavad Gita, the happiness in passion, in the beginning is pleasure. And then afterwards suffering. तो भगवद गीता में भगवान समझाते हैं रजोगुण में जो आनंद है वो शुरू में आनंद लगता है, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है. But the happiness in sattva guna at the beginning looks like austere, to wake up early in the morning for 4:30 is in the temple. Mangalartik, and then you have to do the japa meditation like this. Is some kind of austerity, but afterwards this is a nectar. तो लेकिन जो सत्वगुण में आनंद है, शुरू में बहुत ही तपस्या जैसा लगता है. सुबह जल्दी उठना, मंगलारती करना, जप करना बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन बाद में ये अमृत के समान लगता है. Oh, Srila Prabhupada says in the purport, the word Vishaya refers to the four bodily necessities of life: eating, sleeping, mating, and defending. Srila Prabhupada यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा भय या सुरक्षा इन चार शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है. According to this, there is one verse, Srila Prabhupada quoted these verses sometimes. This verse appears in the book is called the Hitopadesha, Niti Shastra. Yeah. इसके संदर्भ में एक श्लोक है जिसको श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे, उदाहरण दिया करते थे. ये श्लोक हितोपदेश यानी कि शास्त्र में ये श्लोक आता है. And the verse says, Ahara nidra bhaya maitunam cha samanyam etad pasubir naranam. These four activities are common amongst these human beings and the animals. तो इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो चार एक्टिविटी है, ये जो चार जो कर्म है, खाना, सोना, मैथुन और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्यों में और जानवरों में एक समान है. Eating, sleeping, mating, defending. आहार, निद्रा, भय और डर. And then the verse says, Dharmo hite samadhiko vishesh. What makes the difference between human beings and animals is dharma. तो ऐसी क्या चीज़ है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है, वो है धर्म.
Because the human beings act according to the dharma and the animals according to its own instinct. तो अंतर यही है कि मनुष्य कोई भी कर्म करता है वो धर्म के अनुसार करता है और जानवर केवल जो मन में आता है जैसा विचार होता है उस हिसाब से करता है. And then the verse finished like this: Dharmena hina pasubir samanam. Without dharma, there is no difference between human beings and animals. और इस श्लोक के अंत में ये कहा गया है कि बिना धर्म के, अगर किसी के जीवन में धर्म नहीं है तो पशु के समान है. Strong words. बहुत ही जो है कठोर शब्द. Yeah, like this. And what makes the difference is dharma. What makes the differences between human. अंतर करता है मनुष्य और जानवरों में वो है धर्म. Dharma means there is different meanings. धर्म के अलग-अलग अर्थ हैं. For example, dharma means the essence of a substance. और एक अर्थ है धर्म का, कोई भी वस्तु है उसका सार. For example, the dharma of fire is heat and illumination. जैसे कि अग्नि है, उसका धर्म है ऊष्मा देना और प्रकाश देना. The dharma of water is the capacity of clean. तो जो पानी है, जल, उसका धर्म है कि उसको वो हमारी प्यास बुझाता है. And also the dharma of the people, for example, what is the dharma of physician, a doctor? तो जैसे डॉक्टर है, उसका क्या धर्म है? Is to cure the patients. डॉक्टर का धर्म है मरीजों का इलाज करना. The teacher is teaching the people. The parents is to educate the children. तो जो शिक्षक है उसका धर्म है अपने जो शिष्यों को शिक्षा देना. माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को शिक्षित करवाना. And also dharma also is varnashrama dharma. धर्म वर्णाश्रम धर्म भी कहलाता है. The four varnas is the four ashrams. 4 वर्ण और 4 आश्रम. But dharma, the point is, the philosophical point is that what is the dharma of the human being? लेकिन यहाँ जो दार्शनिक जो पॉइंट है, फिलोसॉफी जो पॉइंट वो ये है कि मनुष्य का धर्म क्या है. This we have to find by ourselves. ये हमें खुद को पता करना है मनुष्य का धर्म क्या है. And there is another dharma. In India, everybody says Sanatana Dharma. एक और धर्म है, जैसे भारत में सब लोग कहते हैं सनातन धर्म. The Vaishnava devotee says Bhagavata Dharma, और भक्त लोग कहते हैं भगवत धर्म. which is Bhagavata Dharma. It is our eternal relation with Krishna. और ये भागवत धर्म क्या है? ये है भगवान के साथ हमारा शाश्वत या नित्य संबंध. As Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja. जैसे कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं. It's interesting that Krishna said, Dharma Sanspattanataya, I am the creator of Dharma. And then he says, oh, you have to abandon the Dharma. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोजिकल बात है कि भगवान एक जगह तो कहते हैं जब कहते हैं कि मैं धर्म को स्थापना करता हूँ, फिर आखिरी में कहते हैं कि तुम धर्मों को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ. But this Dharma means the mundane Dharma. लेकिन ये भगवान जिस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं वो सांसारिक धर्म को छोड़ने की बात. As in Srimad Bhagwatam started, Vyasadeva said this, Dharma projito kaitravatra paraman nirmatsaranam chatam.
This book, Srimad Bhagwatam, he rejected this Kayutava dharma, the mundane dharma. Which is mundane dharma? श्रीमद् भागवतम का जो शुरुआत में व्यास देव जी ने जितने भी सांसारिक भौतिक धर्म हैं उनको हटा दिया गया है भागवत से, लेकिन ये भौतिक या सांसारिक धर्म है क्या? Is for example varnashrama dharma. Varnashrama dharma. As Chaitanya Mahaprabhu says, I'm not sannyasa, I'm not vanaprastha, not grihastha, I'm not brahmachari, I'm not grihastha, I'm not brahmana, I'm not kshatriya, I'm not vaishya. My dharma is dasa dasa anudasa. I'm a servant of the servant of the servant of Krishna. तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये भौतिक है, सांसारिक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, मैं तो कृष्ण के दास का दास हूँ. And also another mundane dharma is deva dharma, the demigods worship. और दूसरा जो सांसारिक धर्म है वो है देव धर्म या देवी देवताओं की उपासना करना. Krishna says that this deva dharma is meant for people less intelligent. तो कृष्णा कहते हैं कि ये जो देव धर्म है, देव देवताओं की उपासना करना, ये अल्पज्ञ है, जो कम बुद्धिमान है, उन लोगों के लिए बना है. And then the only dharma is Bhagavata dharma, our eternal relation with Krishna. तो फिर जो only जो धर्म है, केवल मात्र जो धर्म है, वो है भगवत धर्म, जिसका अर्थ है भगवान के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध स्थापित करना. Okay. And then, for finish, I read the last sentence of this. Lord Chaitanya consequently wanted this Krishna consciousness movement to be preached on the western side of the world so that people addicted to sense gratification might be benefited by his teachings. तो इस तात्पर्य के आखिरी लाइन यह है कि इसलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें. Well, about this I can say by my own experience, personal experience. महाराज जी बता रहे हैं कि इस लाइन के बारे में मैं खुद मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ. Because we are preaching in the western part of this world. क्योंकि महाराज जी जो है उसी पाश्चात्य देश के जो हिस्से हैं वैसे वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं. And then we see that it's not easy at all to teach people what is Krishna consciousness. इतना आसान नहीं है वहाँ पर लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान बांटना. You have to be very good preacher आपको बहुत अच्छा प्रचारक होना होगा इसका. in order to convince people to follow, to surrender to Krishna. लोगों को ये विश्वास दिलाना कि कृष्ण को वो समर्पित करें, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रचारक होना होगा. And then we don't expect so many people like this surrendering to Krishna, but there are very good devotees, very sincere devotees and intelligent devotees who are surrendered to the mission of Srila Prabhupada. This is a fact. साधारणतः वहाँ पर लोग बहुत कम मिलते हैं जो कृष्ण को समर्पित करें, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ भक्त हैं जो बहुत गंभीर हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने श्री प्रभुपाद कृष्ण को समर्पित किया. And then I always consider like this,
oh, we are preaching in the West. It's not easy at all. But our guarantee is that the preaching in India is going on very nicely. And then we have so many devotees in India, and the big temples, and the big, very nice programs. And then we said, oh, at least in India, the things are going on very nicely. महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे कई विचार होता है कि यहाँ तो इतना विचार नहीं, इतने लोग आते नहीं हैं, लेकिन जब मतलब बात करते हैं कि भारत में तो बहुत विचार हो रहा है, बड़े मंदिर में बहुत सारे लोग भक्त हैं, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो चल रहा है. And Srila Prabhupada accepted the challenge, and he went to the West to preach. He went to the West to preach, and then he was alone preaching. And then afterwards he said, now I go back to India, and then to establish this ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, and he was very successful. तो श्री प्रभुपाद जी ने जो है चुनौती स्वीकार करी और वो पाश्चात्य देशों में अकेले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने प्रचार किया और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ की स्थापना की और फिर वो वापस यहाँ भारत आकर के यहाँ भी उन्होंने प्रचार किया. Okay. Any question, any comments? किसी का कोई प्रश्न अगर टिप्पणी करना चाहे? You mentioned that Chaitanya Mahaprabhu was saying, I want sannyas, I want grihastha, das, anudas. But yet he still took sannyas. Huh? He took sannyas. Externally, he took sannyas in order to preach to people. He said, people will respect me more, and he will hear from me the message of Krishna. And then he accepted that. But internally he said, no, we are devout of Krishna. This is enough. Anyone can be devout of Krishna. तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है, महाराज ने बताया था चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी होना में रस थे, मतलब दास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास दिया, ऐसा नहीं. महाराज के उत्तर में बताया कि ये बाहरी दृष्टि से उन्होंने जो है सन्यास दिया, और अंदर से तो यही भाव था कि मैंने सन्यासी को ब्रह्मचारी हूँ, भगवान का दास हूँ. और क्योंकि लोग सन्यासी को सुनते हैं, सन्यासी को इज्जत देते हैं, उनको सुनते हैं, तो महाप्रभु ने इसलिए सन्यास दिया ताकि लोग उससे कृष्ण भक्ति के विषय में सुने. And in the same way, Srila Prabhupada also established this ashram sannyas in order to increase the preaching program. इसीलिए श्री प्रभुपाद ने जो है स्वामी सन्यास आश्रम की व्यवस्था की है, जिससे कि जो है प्रचार को बढ़ोतरी मिले. Okay? We stop here. Srila Prabhupada ki jai.